तो we actually started number patterns in the previous class और हमने ये समझा था कि नंबर पैटर्न्स का जो पेपर शेयर है वो पेपर 1 में रहता है अराउंड 3 to 4 मार्क्स, जबकि पेपर 2 में अगर ये आएगा तो फिर तकरीबन 8 to 10 मार्क्स का शेयर रहेगा इसका। नाउ टॉकिंग अबाउट दी कॉन्सेप्ट्स, तो नंबर पैटर्न्स में हमारे पास एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट है कि आपके जो नंबर्स हैं वो सीक्वेंशियली चल रहे होते हैं एंड यू वुड सी द नंबर्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस इन अ सर्टेन ऑर्डर, और उस ऑर्डर को यूज करते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म्स को भी डिसाइड करना है, जज करना है, एंड प्लस मोर ओवर वी नीड टू चेक फॉर द फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज बनाना भी यहाँ पर हमें सीखना होता है। नाउ स्टार्टिंग अप विद द टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, तो हमारे पास इन टोटल 3 टाइप्स के पैटर्न्स हैं। द फर्स्ट वन इज इक्वल डिफरेंस पैटर्न, जहां पर आप एक सर्टेन टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं टू क्रिएट अनदर टर्म, द प्रीसीडिंग टर्म। तो जब भी कभी आप एक नई टर्म बनाना चाहेंगे तो आपने एक पुरानी टर्म के अंदर कुछ सर्टेन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी होती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो होती है परफेक्ट स्क्वायर्स की। लाइक वी वुड बी टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ द टर्म पोजीशन। तो टर्म पोजीशन के हम स्क्वायर्स करके उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए वैल्यू को डिसाइड करते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट को अभी फिलहाल स्किप कर दें, जब हम इस पर पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे। सो फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। फिर हमारे पास इक्वल डिफरेंस में आ गया था एडिशन सीक्वेंस, जहां पर हम एक सर्टेन वैल्यू ऐड कर रहे थे। सो एज यू कैन सी वी वर एक्चुअली एडिंग अप 9 इन द फर्स्ट टर्म टू क्रिएट द लेटर टर्म। फिर हमने अगेन 9 को ऐड किया था यहाँ पर और फिर नेक्स्ट टर्म क्रिएट कर ली थी। वी रिपीटेड द सेम प्रोसेस टू क्रिएट लेटर टर्म्स रिपीटेडली। उसके बाद आपको कहा गया एग्जामिनर की तरफ से कि भाई T3 बता दें। तो आपने थर्ड टर्म देखी और वो बन रही थी 20, तो आपने लिख दिया 20 एज योर थर्ड टर्म। फिर एग्जामिनर ने आपको कहा कि आपने 7th टर्म जज करनी है। तो आपके पास एक्चुअली लाइक 5 टर्म्स ऑलरेडी मौजूद थी। आपने 7th टर्म के लिए 2 बार +9 यहाँ पर परफॉर्म किया है और आपके पास आ गई है 7th टर्म, एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर वैल्यू ऑफ 56. Then in the last part the examiner was saying that we need to create a formula for the sequence. तो formula create करने की logic मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो भी formula आप create करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आप difference लेकर आएंगे, उसको multiply करवाएंगे n के साथ और फिर एक certain value add या subtract करनी होती है finally। तो हम कैसे जज करेंगे कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं? तो इसलिए मैंने लगाया है n की जगह पर 1 and that gives me 9, but n was 1 and having the value of 2। जब n हमारे पास 1 था तो वैल्यू आ रही थी 2, मतलब मैंने 7 को सब्ट्रैक्ट करना था यहाँ पर। so we are going to create a sequence like this। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, हम एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अभी करने लगे तो वहां पर आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। Now we carried on with that same sequence and that same understanding and we completed our previous lecture। तो आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने लगा है वो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है लेट्स से 18 और फिर मुझे कहा गया है दैट आई नीड टू complete this term sequence and create the value of T5। तो T5 मुझे क्रिएट करना है, सीक्वेंस मेरे सामने है और मुझे अब जज करना होगा T of 5। तो आप अगर नोटिस करें तो आपकी हर एक टर्म -4 के साथ जा रही है। ईच एंड एवरी सिंगल टर्म इज गेटिंग अ डिडक्शन ऑफ 4। तो आपने यहाँ पर अगर नोटिस किया हो तो हमारी n 1 है, then n is 2, then over here n is 3 and then we have n of 4। अगर मैं n of 5 पता करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा? I'll subtract 4 again and I'll have the value of 2 over here। तो T5 हमारा बन जाएगा 2। वेरी गुड है ना।
तो हमारे पास T5 आ गया S2. Now the examiner is saying that we need to figure out the formula for the sequence. तो इस सीक्वेंस का अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? वी आर गोइंग टू पिक अप द डिफरेंस विच इज -4. इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है n के साथ एंड लेट से अगर मैं n को 1 रखता हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है -4. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज we need to add up something into this negative of 4 to create 18, क्योंकि n1 पे मेरे पास आंसर 18 आ रहा है जबकि यहाँ पर मैं अभी सिर्फ -4 तक पहुंचा हूँ. So what I shall add over here to create a total of +18. तो मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा 22 and that would actually land us at a sequence formula of -4n plus 22. I hope this is perfectly clear. एक एग्जाम्पल और करते हैं फिर उसके बाद आप लोगों ने ट्राई करना होगा. So the examiner is saying that we have a sequence of 25, 19, 13, and 7. And he wants us to find the formula for the given sequence. तो इस गिवन सीक्वेंस के लिए मुझे फॉर्मूला जज करना है और उसके लिए मुझे सबसे पहले लाना होगा अपना डिफरेंस. तो मेरा डिफरेंस क्या है यहाँ पर? द डिफरेंस इज ऑफ -6. लाइक आई एम सब्ट्रैक्टिंग 6 आउट ऑफ ईच वैल्यू टू गेट माय फाइनल आंसर और माय लेटर आंसर. तो अब मैंने -6 को फिगर आउट कर लिया है एज माय डिफरेंस. तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक टर्म के अंदर से, क्योंकि -6 कर रहा हूं, तो -6 को मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है n के साथ. आई विल मल्टीप्लाई -6 विद n. तो n के साथ हमने करवा लिया है मल्टीप्लाई. अब n की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है -6. नाउ आई नीड टू judge a number or pick up a number that would add up over here to create an answer of +25, and that is only possible with 31. तो हमने 31 को ऐड कर लेना है यहाँ पर. So the formula is going to be -6n plus 31. Now there is a very good question over here that do we always add in the decreasing sequence? Like हमने हमेशा ही कुछ ऐड करना होता है डिक्रीजिंग सीक्वेंस के फॉर्मूला में या नहीं? तो जी बिल्कुल, हमने एक सर्टेन नंबर ऐड ही करना होता है इन अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस. लाइक आप अगर फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं तो आपने कुछ एक सर्टेन वैल्यू प्लस करनी होगी. एंड ओवर हियर एज वेल इफ यू सी हम +22 कर रहे हैं. एंड देयर वाज अनदर क्वेश्चन जहां पर एक स्टूडेंट ने ये पूछा है दैट would we always add in the decreasing sequence and subtract in the increasing sequence? Like over here, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी लेकिन हम यहाँ पर भी ऐड ही कर रहे हैं. सो इन द इंक्रीजिंग सीक्वेंस इट्स नॉट कंपलसरी कि हम +3 +5 या -3 -5 ऐसा कुछ लिखेंगे. इट कुड बी लाइक एडिंग अप और सब्ट्रैक्टिंग एज वेल. तो n वाली टर्म के आगे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं इन अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जबकि डिक्रीजिंग सीक्वेंस में अगर आप नोटिस करें तो आपने सिर्फ ऐड ही करना होता है. सो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू यू पीपल. नाउ एक सीक्वेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोगों ने मुझे जज करके बताना है इसका फॉर्मूला. So the formula is to be figured out for a sequence having 32, 23, 16, and 9. Now you people need to first tell me what is the value of T3, what would be the value of T5, and then the formula of Tn.
तो आप लोगों ने टी एन जब भी देखना है तो ये समझ लेना है कि एग्जामिनर भाई हमसे फॉर्मूला मांग रहे हैं। तो जब एग्जामिनर टी एन लिखेंगे तब वो फॉर्मूला मांग रहे हैं आपसे। लेकिन अगर वो एक सर्टेन नंबर लिखते हैं एन की पोजीशन पे टी के साथ, तो आपने टर्म की वैल्यू बतानी होती है। तो मुझे कोई T3 बता सकता है फिलहाल, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ T3 फ्रॉम दिस सीक्वेंस? 16, वेरी गुड। तो हमारे पास T3 आ गया है एज 16। और आप में से कोई मुझे T5 बता सकता है? वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फॉर्मूला के लिए लास्ट पार्ट है विच इज आस्किंग अस फॉर द फॉर्मूला of this particular sequence. Anyone of you who could judge the formula? Yes, anyone of you who has figured out the formula for this sequence? Sir, minus 7n plus 37. Okay, so we have the answer as minus 7n plus 37. Perfect, that's correct. The rest of you, if like you are getting the same answer, then it's okay. Otherwise, I'm showing it to you कि हम कैसे इस फॉर्मूला को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। द डिफरेंस इज -7। हर एक टर्म में से -7 कर रहे हैं आप टू फिगर आउट द लेटर आंसर। सो -7 इज योर नंबर। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है n के साथ, एंड इफ यू पुट n एज 1 तो आपके पास आंसर आना चाहिए -7, विच इज नॉट करेक्ट क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है एज 30। तो हम क्या करेंगे, हम -7 के साथ कुछ ऐसा ऐड करेंगे दैट वी एंड अप हैविंग 30 एज आवर आंसर, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल विद 37। अब एक प्रॉब्लम ये आ जाती है स्टूडेंट्स को कि सर हम फॉरन कैसे जज कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नंबर कि 37 ही आएगा। हाउ कैन वी जज इट डायरेक्टली? तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म को पिक करना है और डिफरेंस को ऐड करवा देना है इसके साथ। लाइक द डिफरेंस इज -7, तो आप माइनस को इग्नोर कर दोगे और सिर्फ 7 को पकड़कर फर्स्ट टर्म में ऐड कर दोगे। दैट इज गोइंग टू गिव यू 37, विच इज योर नंबर ओवर हियर। अगर हम प्रीवियस सीक्वेंसेस की तरफ भी जाएं तो हम वहां पर भी नोटिस कर सकते हैं दैट एक्चुअली इफ यू सी इट्स 25 एज द फर्स्ट नंबर। आपने 25 के अंदर अपना डिफरेंस जो कि -6 था उसको ऐड कर लिया, इग्नोरिंग द साइन अगेन। तो 25 में अगर आप 6 प्लस करें दैट वुड गिव यू 31, एंड दैट इज द नंबर बीइंग एडेड अप ओवर हियर। द सेम गोज विद द प्रीवियस सीक्वेंस जहां पर हमारे पास 18 was our first term and the difference was -4। तो आपने 18 के साथ 4 को ऐड कर लेना है and that would give you 22 right over here। तो इसीलिए हमने 22 को यहाँ पर ऐड कर लिया। Now I hope this is perfectly clear to all of you। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move forward। Yes, all of you are perfectly clear? Yes, sir. ओके, तो अब हम जाने लगे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दिस इज एक्चुअली टेलिंग अस टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन t of 2 एंड t of 5। तो आप लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पर डिफरेंस ऑफ t of 2। इनफैक्ट लेट्स मेक इट अ बिट मोर डिफिकल्ट एंड टेक इट एज t of 12 एंड t of 15। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस फाइंड करना है t of 12 और t of 15 के लिए,
और एग्जामिनर भाई ने हमसे पहले ही सीक्वेंस जो है उसका फॉर्मूला जनरेट करवाया था फ्रॉम हियर, देयर यू गो, इट्स -7n + 37। तो आपके पास n मौजूद है as 12 in the first place and as 15 in the second place। तो आप -7n + 37 को यूज करते हुए पहले t of 12 फाइंड करेंगे, which is going to be -84 + 37, and that would give you -47 as your number. You'll do the exact same thing for t of 15, and that would be -7 times 15 plus 37, and the answer is going to be -105 plus 37, which would end up at 68 of negative। अब क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है तो -47 जो कि t of 12 है इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे विद -68, which is actually t of 15, and you would end up having -47 plus of 68, with the final answer being 21 of positive। So this is your final working for this particular sequence type। तो यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस को कर लिया है कंप्लीट, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अब कवर हो चुके हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट सीक्वेंस टाइप की तरफ, एंड दैट इज एक्चुअली योर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो आप परफेक्ट स्क्वायर्स की तरफ जा रहे हैं विच आर नॉट दैट हार्ड ईदर, एंड दे आर जस्ट वेरी सिंपल, और बहुत ही आसानी से आप अपनी सीक्वेंसेस के फार्मूलाज भी जनरेट कर सकते हैं और लेटर टर्म्स को भी आराम से फाइंड कर सकते हैं इन परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर सीक्वेंस में हमारे पास सबसे पहली जो लॉजिक है वो ये है दैट वी नीड टू ब्रिंग आउट द वैल्यू ऑफ n and tn for the first few terms and check out the sequence। तो सीक्वेंस हमने जब चेक करनी है तो मुझे गिवन है लेट्स से 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस गिवन है। नाउ इफ आई ब्रिंग आउट देयर टर्म पोजीशंस, सो इट्स टर्म नंबर 1 2 3 एंड 4 मेंशन्ड ओवर हियर। अब टर्म नंबर को अगर आप गौर से देखें तो वो पोजीशन के साथ बिल्कुल एक सर्टेन रिलेशन में है, एंड दैट इज अ रिलेशन ऑफ स्क्वायर। तो 4 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। द सेम गोज ओवर हियर, जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है, एंड दैट्स इट फॉर ईच एंड एवरी सिंगल टर्म। तो हर एक टर्म हमारे पास सेम लॉजिक के साथ चल रही होगी। और अब मुझे एग्जामिनर भाई ये कह रहे हैं कि आपने बताना है t of 7 कितना होगा। सो एनी वन ऑफ यू हु कुड टेल मी द वैल्यू ऑफ t of 7? Any one of you? No, it's not going to be 49. It's going to be something different. Yeah, it's 49. 47 नहीं होगा हमारे पास t of 7, बल्कि 49 होगा। Now, how come are we getting the t of 7 as 49? तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो भी हमारे पास n है उसको अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वी आर एंडिंग अप एट t of n। Like if I have n as 3, तो आप t of 3 को अगर नोटिस करें तो वो बन रहा है 9। द सेम गोज विद 7, तो हम 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो t of 7 आ जाएगा हमारे पास, एंड दैट इज गोइंग टू बी 49। नाउ I want you people to figure out the value of t of 10 for this particular sequence। 100, very good। तो हमारे पास t of 10 आ जाएगा as 100। और अब अगर आप लोगों से कहा जाए that you need to figure out the value of t of 4 subtracted with t of 2,
So any one of you who could tell me the answer for it? T of 4 subtracted with T of 2. Okay, T of 4 is 16 and T of 2 is 4. आपने करना है subtract and you would end up having the answer as 12. Okay, perfect. तो यहाँ पर हमारा logic of like finding difference हो गया है complete. अब हम जा रहे हैं formula making की तरफ. So if I wish to figure out the value for T of n, तो actually मुझे find करना होता है इस type के questions में formula. कुछ केसेस में एग्जामिनर आपको डायरेक्टली कह देंगे दैट यू नीड टू फिगर आउट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एन, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था. लेकिन कुछ पार्ट्स में, कुछ क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपको राइट अवे टी ऑफ एन भी फाइंड करने के लिए दे सकते हैं. सो दैट्स कम्प्लीटली ओके. और टी ऑफ एन का मतलब भी फॉर्मूला ही होता है. एग्जामिनर आपसे कोई डिफरेंट चीज नहीं मांग रहे हैं, बट ही इज ओनली आस्किंग यू अबाउट द फॉर्मूला. तो इस सीक्वेंस के लिए अगर आप नोटिस करें तो जो भी टर्म पोजीशन है उसको हम स्क्वायर करके टर्म वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. लाइक 1 स्क्वायर इज 1, देन 2 स्क्वायर इज 2, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16. तो whatever the position is, it would be squared and we'll figure out the final answer for that particular position value. तो उस पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं. सो इफ वी हैव द पोजीशन एज n, वी कुड जस्ट स्क्वायर इट एंड फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजीशन. तो हमारे पास tn आ जाएगा एज n स्क्वायर. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड. यस, ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद दिस? ओके, परफेक्ट. तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर मुझे गिवन है एक सीक्वेंस, बट दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इनडिफरेंट सीक्वेंस, जहां पर मुझे स्क्वायर ऑफ 2 गिवन है पहले, फिर स्क्वायर ऑफ 3 है मेरे पास, देन वी हैव 16, 25 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर एग्जामिनर भाई ने हमारे साथ थोड़ा सा कर दिया है गेम, और वो गेम ये है कि जहां पर मेरे पास n बन रहा है 1, वहां पर स्क्वायर आ गया है 2 के लिए. फिर अगर हम सेकंड टर्म को देखें तो वहां पर स्क्वायर आ गया है 3 वाला, एंड द सीक्वेंस गोज ऑन. सो व्हाट द like examiner is doing actually is that he is taking up the square of the later term. करंट टर्म के बजाय वो लेटर टर्म का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं वो ये कि जब भी कभी आपसे वर्ड लेटर के बारे में कहा जाएगा इन दिस पर्टिकुलर लाइक टॉपिक, तो लेटर का मतलब सिंपल है, एंड दैट इज n+1. लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है n+1. So whenever you see the word later, it means that you need to do n+1. अब अगर हम लेटर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम n+1 का स्क्वायर करेंगे. If we wish to find the later term, we would do n+1 and we'll figure out the later term. So the exact same thing is being done over here. कि हमने अगर लेटर टर्म का स्क्वायर करना है तो लेटर का मतलब होता है n+1 और हम उसका कर देंगे square. So now over here if you see the value of n was 1, but we are doing the square of later term over here. The same goes for this particular number where n is 2, लेकिन हम स्क्वायर किसका कर रहे हैं? लेटर टर्म का, which is 3. Then we will do the same with 3, जहां पर हमारे पास n तो है 3 लेकिन हम स्क्वायर लेटर टर्म का कर रहे हैं. The same goes with 4 as well, and the sequence goes on. Now the thing over here to be understood is कि जब भी कभी आप लेटर टर्म को या लेटर वर्ड को देखेंगे तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर आई एम डीलिंग विद
n plus 1. Now the question here is that we need to find t of 7. तो t of 7 हमें यहाँ पर करना है पहले पार्ट में फाइंड. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है t of 7 कितना होगा? Yes, anyone of you who could tell me the value of t of 7? 64. Very good. Because if n is 7, तो हमने क्योंकि लेटर टर्म का स्क्वायर करना है, so that would be 8, और फिर 8 का हम कर देंगे स्क्वायर and that would give you 64. Now we are going to try out the same sequence for the difference of t of 12 and t of 10. तो t of 12 और t of 10 का हमें फाइंड करना है यहाँ पर डिफरेंस. तो आप में से कोई बता सकता है व्हाट वुड बी द आंसर? First of all, tell me the value for t of 12. By the way, ये जनरली पेपर 2 में आता है, तो आप लोग अगर चाहें तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं. ऑल्दो एज पर आवर सिलेबस ऑफ IGCSE एज वेल एज O लेवल्स हमें 16 तक परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए. और ये जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया था नंबर्स, तो मैंने आप लोगों को लिस्ट डाउन करवाए थे परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स. परफेक्ट स्क्वायर्स याद होने चाहिए 16 तक और परफेक्ट क्यूब्स याद होने चाहिए 6 तक. दैट इज मैंडेटरी, कंपलसरी. और एग्जामिनर भाई जो हैं वो कई बार कई जगहों पर ऐसे क्वेश्चन देते हैं जहां पर आपके परफेक्ट स्क्वायर्स और परफेक्ट क्यूब्स चेक हो जाएं. सो ओवर हियर वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ 13 क्योंकि हम 12 पर खड़े हैं एंड वी नीड टू डू द स्क्वायर ऑफ द लेटर टर्म. सो वी विल एक्चुअली बी डूइंग द स्क्वायर ऑफ 13. दैट एंड्स अप एज 169. Now we have 10 over here. तो हमने नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है and that would be square of 11 and you'll end up having 121 as your answer. अब आप करेंगे डिफरेंस को फाइंड और आपके पास डिफरेंस आ जाना चाहिए as 48. Now I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्वेरी है तो पूछ लें, otherwise we'll move on to the later part. Okay, now coming on to the next part, the examiner is saying that you need to figure out the value of t of n. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है t of n किस चीज के लिए है? Like what is the examiner actually asking over here? Formula. Formula, very good. तो यहाँ पर examiner भाई हमसे मांग रहे हैं formula और अब formula मुझे करना है find. तो कोई मुझे बता पाएगा what is the formula for this particular sequence? n plus 1 whole square. Very good. It's n plus 1 whole square. Excellent. तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस के लिए फॉर्मूलाज पिकअप कर सकते हैं. और अगर मुझे सीक्वेंस डिफरेंट भी मिल जाती है तो मुझे टेंशन नहीं लेनी है. The only thing I need to do is I need to look up onto that particular formula or that sequence और फिर हम formula या equation generate कर लेंगे. So the only thing is that I should have an idea of that sequence कि भाई ये equal difference की sequence है तो इसका formula कैसे बनना है. अगर ये perfect square की sequence है तो इसका formula कैसे बनेगा. तो दो टाइप की sequences हम अभी तक कर चुके हैं. We'll still do one more like sequence for perfect squares, then we'll move on to the last type of sequence. तो एक आखिरी क्वेश्चन perfect square का हम अभी यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं. So this one is having squares of 0, 1, then 4, then we have 9 and then 16. Now the important thing over here is कि अगर आप n को notice करें तो n हमारे पास है 1, then we have 2, 3, 4 and 5. So that is our values of n. Now what we need to do here is we need to judge
कि स्क्वायर्स हो किन नंबर्स के रहे हैं. लाइक इफ वी आर स्टैंडिंग एट 2 तो हमारे पास स्क्वायर प्रीवियस टर्म का है. इट इज अ स्क्वायर ऑफ प्रीवियस टर्म. द सेम गोज विद 3 जहां पर स्क्वायर ऑफ 2 हो रहा है. और फिर अगर हम 4 को नोटिस करें तो 4 में स्क्वायर ऑफ 3 आ गया है. सो एज वी स्टडीड, अगर हम लेटर टर्म की बात करेंगे तो हमने यूज करना है n+1. बिल्कुल वैसे ही अगर हम प्रीवियस टर्म की बात करेंगे तो हमने यूज करना है n-1. तो लेटर का मतलब होता है n+1 जबकि प्रीवियस का मतलब होता है n-1. So that is going to be your logic for this particular part. अब मुझे आप लोगों ने ये बताना है that what is going to be the value for t of 11. Yes, any one of you who could tell me the value of t of 11? 100. Very good. तो t of 11 हमारे पास हो जाएगा 100. Now let's say if I am having a sequence with the previous squares और मुझे कहा जा रहा है कि भाई आप फाइंड कर दें t of 16 minus t of 12. So can any one of you tell me the value of t of 16? What would be the value of t of 16? $225. Very good. And then what is the value of t of 12? t of 12 कितना होगा मेरे पास? 121. Very good. Now we just need to figure out the difference of these two terms and we'll be having our final answer. That's actually 104. तो इस तरीके से हम इस टाइप के सीक्वेंसेस को डील करेंगे. Now we are going to figure out t of n for this particular sequence. जी, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है t of n क्या होगा यहाँ पर? Very good. It's n-1 squared. हम प्रीवियस टर्म का स्क्वायर बना रहे हैं यहाँ पर. So that makes up n-1 with a square. Now we are done with perfect squares. Before moving on to the next type of sequence, I need a confirmation from all of you. If all of you are perfectly clear, या किसी को कोई problem, कोई query है इसमें? I'm not hearing anything from Varda, Nabiha, Ramsha, and Mufaddal. I'm not hearing anything from you either. It's clear, sir. Okay. And what about you, Nabiha? Are you perfectly clear? Ramsha? Okay. Now moving on to the next part. अब हमने डील करना है with a particular sequence type जिसको हम कहते हैं cross product. Now this is one of the hardest and the most difficult sort of sequence जहाँ पर हम डील करेंगे with the cross products. तो क्रॉस प्रोडक्ट्स में आपने बेसिकली टर्म पोजीशंस को मल्टीप्लाई करवाना होता है. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द टर्म पोजीशंस. नाउ द important thing over here is कि क्रॉस प्रोडक्ट्स में आप जब भी सीक्वेंस क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप पोजीशंस को मल्टीप्लाई करवाते हैं. देन यू कुड आल्सो डिवाइड इट बाय सर्टेन नंबर्स. लाइक आपने जब प्रोडक्ट निकाला है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं. इन सम केसेस आप कभी डिवाइड बाय 3 कर देते हैं. सो देयर इज अ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स और यही चीज इस टाइप की सीक्वेंस को काफी डिफिकल्ट बना देती है.
Before moving on to the details of cross product, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ from the perfect squares sequence जो कि आप लोगों ने घर पे ट्राई करना है. So we have 9, 16, 25, 36 over here. तो ये सीक्वेंस आप लोगों ने घर पे सॉल्व करनी है. You need to figure out the value of t of 5. You need to figure out the difference between t of 7 and t of 6, and then you need to figure out t of n. This would be your homework. You people need to do it at your home and let me know your answers in the next class. तो अब शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट्स की डिटेल. तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास जो लॉजिक है वो ये होगी that we need to multiply the positions or the numbers of those positions. Like मेरे पास एक certain number है which is 2, then I have got 6, then I have 12, then 20, and then 30. Now if you see, you don't have any like equal difference. टर्म्स के बीच में कोई इक्वल डिफरेंस नहीं है. साथ ही साथ अगर आप स्क्वायर्स को चेक करें तो 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, and not even a single one out of them is a perfect square. So we don't have equal difference and neither do we have any perfect square present over here. तो हम क्या करेंगे, हम इस टाइप के सीक्वेंस में लॉजिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे. अब क्रॉस प्रोडक्ट की लॉजिक कैसे यूज होती है ये समझना है आप लोगों ने. सो ओवर हियर वी आर फर्स्ट गोइंग टू मार्क द पोजीशन नंबर्स. सो दैट्स 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारे पास फिफ्थ टर्म तक वैल्यूज मौजूद हैं. इफ यू सी क्लोजली ऑन टू दीज नंबर्स तो आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के एक सर्टेन वैल्यू ड्राइव किया. द सेम गोज ओवर हियर where we have 2 and 3 being multiplied to give you 6. And then you have 3 by 4 which would give you 12, and then finally we have 4 and 5 giving us 20, and the sequence goes on. तो आप अगर नोटिस करें तो आपने करंट पोजीशन को मल्टीप्लाई करवाया है लेटर पोजीशन के साथ. Like over here n was 1 and it was being multiplied with the later number to give you the current answer. Like अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर n हमारे पास 1 है और इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लेटर नंबर के साथ. Now the same goes over here for 6. The n was actually 2 and we multiplied it with the later term and that was 3, and the sequence would go on. आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि आपने n को लेटर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. To figure out the value of tn, we are actually multiplying n with the later term. तो later का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? What does the term later means? ये जो मैं later कहे जा रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है? Very good. इसका मतलब होता है n plus 1. So we are actually multiplying n with n plus 1. So if n was 1 over here, we are multiplying it with a later number and that is going to be 2. Yeah, in short अगर हम कहें तो it would be n plus 1. The same goes over here. If n is 4, it's going to be multiplied with the later number which is 5, and to be precise it could be termed as n plus 1 again. तो हम n को n plus 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं to get our final answer. अब अगर आप चाहें तो इस like फॉर्मेशन को simplified फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So that would give you n square plus n as your final formula. तो t of n हमारे पास रिड्यूस होकर बन जाएगा n square plus n, और ये होगा हमारा formula for this particular sequence. Now since we are already very good at like picking up the term numbers, अगर मैं आपको t7 के लिए कुछ कहता हूँ या t5 के लिए या t6 के लिए कुछ कहता हूँ तो आप लोग काफी आसानी से काफी feasibly उसको फाइंड कर सकते थे. तो हमने डायरेक्टली जंप किया है यहाँ पर फॉर्मूला पे. Now we are going back towards the finding of our position values. Like the examiner has said that I need to figure out the value of t of 7.
तो t of 7 के लिए हमने लेटर नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है 7 को. So what would be the answer for t of 7? Any one of you? जी कोई बता सकता है what would be the answer for t of 7? Actually the n over here is turning out to be 7. तो हमने लेटर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है and that would end up as 7 times 8. So that would give you 56 as your answer. Now in the same way, if I try out solving for t of 9, so can any one of you tell me the value for t of 9? N is 9 over here, so t of 9 बता सकता है कोई? It would be 9 times 10 and that would give you 90 as your answer. तो जो भी पोजीशन होगी हमारी हमने उससे लेटर नंबर को मल्टीप्लाई करवा देना. Now with the same concept being in mind, we need to figure out the answer for t of 10 and t of 8. तो t of 10 और t of 8 का मुझे फाइंड करना है डिफरेंस. तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा what would be the answer for t of 10? Yes, it's 110. और फिर हमारे पास आ जाता है t of 8. Can any one of you tell me the answer for t of 8? So n over here is 8. It's going to be multiplied by the later number and that is going to be 8 times 9 and that would be 72. इस तरीके से हमारे पास t of 10 और t of 8 आ चुके हैं. We just need to subtract them as per our equation. So that would reduce at 110 minus 72. And our final answer is going to be 38. I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Okay, so now we are moving on to another part which is very similar to part C. और यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है that I need to figure out the answer of t of 15 being added up with t of 10. Yes, any one of you who could tell me the answer for t of 15 added up with t of 10? What would be the value of t of 15? So n is actually 15 over here. हम इसको multiply करवाएंगे later term के साथ. That would be 16. So 15 times 16 is actually going to give you 240 as your number. Now the same goes with t of 10 जहाँ पर n हमारे पास 10 है और क्योंकि हम इस पूरी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं लेटर टर्म के साथ, so we are going to multiply it with 11 and that would end up giving your answer as 110. तो अब आपने क्या करना है, आपने 240 को एड अप करवाना है 110 के साथ and that would give you 350. Okay, perfect, very good Anna. तो हमारे पास T15 plus T10 आ गया है as 350. Now I'm going to give you people a similar question और ये आप लोगों ने try करना है and let's see what the answer is. We have T of 8 added up with T of 6 subtracted by T of 9. So you people need to sort this out और मुझे आप लोग बताएंगे अपना final answer. Okay, so we have the answer as 24. Can any one of you also confirm if it's 24 or some of you are getting some different answer?
Okay, every one of you is getting 24. I'll just give you a quick review कि भाई 24 कैसे आ रहा है. So we have n as 8 over here. तो हमने n of 8 को multiply करवाना है later term के साथ, and that would give you 72. Then you have n of 6 over here. You're going to multiply it with the later term, and that would be 7, and you'll end up having 42 over here. And then finally we have t of 9, where n is 9. We are going to multiply it with 10, and you'll end up getting 90. So your values are going to be 72 plus 42 minus 90 as per the sequence. And you'll be having 114 minus 90. That would give you 24 as your answer. Perfect. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन बन रही है. आई होप नाउ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद दिस. तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की ही एक सीक्वेंस गिवन है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है. नाउ द डिफरेंस ओवर हियर इज दैट वी आर स्टार्टिंग विद 0, देन वी आर हैविंग 2, देन वी आर हैविंग 6, then 12, then 20 and so on. तो कुछ इस तरीके से मेरे पास बन रही है सीक्वेंस. आपने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर लिखनी है वैल्यू ऑफ n. So it's 1, 2, 3, 4 and 5. Now can any one of you tell me the value of t of 6? कोई t of 6 बता सकता है मुझे? It's 30. Very good. तो हमारे पास t of 6 आ गया है as 30. Now the next question is saying that I need to figure out the value of t of n. तो t of n की अगर ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर भाई is asking me about the formula. तो मुझे इस सीक्वेंस का बनाना है फार्मूला, और फार्मूला से पहले मुझे ये समझना होगा कि हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, whether it is like equal difference, whether it is a perfect square or it is a product. तो equal difference तो नहीं है यहाँ पर, आप नोटिस कर सकते हैं. The difference is like very indifferent and it's not the same in each term. So the concept or the condition of equal difference is not applicable over here. तो हम क्या करेंगे, हम perfect squares को check करेंगे. Now if you see, we don't have any perfect square coming up over here. So the condition of perfect square is not applicable either. Now the last thing left for like this formula is कि यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को ट्राई करते हैं. So if you see, we have 3 over here. 3 पर हमारा जो आंसर आ रहा है that is 6, which means that we are multiplying it with the previous number. तो n जो भी हमारे पास मौजूद है वो एक्चुअली प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक आंसर दे रहा है अपने लिए. So if n is 4, the answer is 12 because 4 is being multiplied with the previous number. तो हम एक्चुअली n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं प्रीवियस नंबर के साथ. अब आप में से कोई मुझे बता सकता है प्रीवियस का मतलब क्या होता है? It's n minus 1. वेरी गुड. और अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर का मतलब क्या होता है? What does term later means? n plus 1. वेरी गुड. तो जब भी कभी आपने लेटर या प्रीवियस की टर्म यूज की है तो आपको n-1 और n+1 याद आ जाना चाहिए फौरन. Now the formula is n times n-1. अब अगर आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. So you'll multiply n with n and n with -1. So you'll end up getting n square minus n as your final answer. And that would be your sequence formula. तो इस तरीके से हम formulas को generate कर सकते हैं. Now one last part from this particular question, and it was only assessed in like 2009 variant, और ये 2009 के बाद कभी ऐसा क्वेश्चन असेस नहीं हुआ है in the chapter of number patterns, जहाँ पर एग्जामिनर ने हमें ये कहा that t of 4 is being added up with t of 3
and it is greater than t of 7 minus t of 6. Is it true or false? Show your working. अब मुझे अपनी वर्किंग शो करते हुए प्रूफ करना है whether I'm like considering it to be true or false. And this question was actually for 2 marks. तो examiner जो है हमें 2 marks दे रहे हैं. One is for the statement whether we mark it as true or false, और second mark हमें मिलेगा working पे. तो आप लोगों ने जरा ट्राई करना है. You have the formula of n square minus n and you need to sort it out and get your answer. सबसे पहले आप t of 4 और t of 3 को sort out करेंगे. That would give you 12 plus 6, which would be 18. And then you need to sort out t of 7 minus t of 6, and it is going to be 42 minus 30, and that would be 12. Now, if you see, this particular term is giving you 30, जबकि later part पे आपके पास आंसर आ रहा है as 12. So we would say that yes, t of 4 added up with t of 3 is greater than the difference of t of 7 and t of 6. तो ये हमारे पास condition of true आ जाएगी, और साथ में आपने वर्किंग शो करनी है, which would actually be telling to you that t of 4 plus 3 is equals to 18. T of 7 minus t of 6 is 12. Hence, it is proved that 18 is greater than 12. So, t of 4 plus 3 is greater than t of 7 minus 6. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आया था 2019 में, and it was in the variant section. Zone 3 का ये पेपर था जहां पर आपको ये क्वेश्चन मिला था. Now we are done with it. अब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं. We are now going to do some past paper questions in the next class, और इंशाल्लाह next class में हमारा ये टॉपिक wind up हो जाएगा. So we'll be probably starting a new chapter in our Sunday's class. Hopefully we'll do half an hour for past papers on Sunday, and the remaining half an hour would be for the 20th chapter. Probably that would be for circle properties. Circle properties inshallah हम start करेंगे, और hopefully circle properties would also be completed within like 1.5 class. So that's a wrap for today. But before leaving, I need a confirmation from all of you if all the things taught today are perfectly clear, या किसी को कोई problem, कोई query है. Yes, all of you are perfectly clear. Ramsha, Khatija, Mufaddal, Nabiha, Varda, all of you Yes, are clear. yes. Okay, perfect. तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी संडे को. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.